ओके। तो अभी हम लोग आइगन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके। सो यू जस्ट राइट हियर इवोल्यूशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ओके। सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आइगन वैल्यूज का मतलब कि हमको लेमडा जो हमारा है वो कैलकुलेट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू दैट लेमडा विच वेक्टर विल बी एज अ आइगन वेक्टर, वी नीड दैट वन। ठीक है, तो पहले हम लीनियर ऑपरेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग एनी लीनियर ऑपरेटर टी विच इज फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वी। ओके। सो कोई भी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, अगर हम इसको नॉन जीरो वेक्टर v हम कह दे रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर which is belonging to b, it's said to be eigenvector if there exists scalar lambda such that this is t of v is just equal to lambda times v. Clear? And this vector v is a non-zero vector, तो ध्यान दीजिएगा, if you are just taking टी वी और लेमडा वी इधर बाहर इधर ले लिए, तो यू विल गेट जीरो वेक्टर दिस साइड। ठीक। सो दिस इज टी माइनस लेमडा टाइम्स, आप इसको आइडेंटिटी मैपिंग भी बोल सकते हैं, दिस इज और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी। कैपिटल वी है यहाँ पे, दिस इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या नहीं भी मेंशन करते हैं, वी आर अंडरस्टूड कि दिस इज और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वी हैव दिस इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस टी and v is just equal to 0, and clearly this v is a non-zero vector। और जब नॉन जीरो वेक्टर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का जीरो पे हो रहा है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते थे, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वी सेड दैट इज अ सिंगुलर। ओके। सो दिस इंप्लाइज, हमें पता है ना सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज मैपिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन टू अ जीरो वेक्टर, है ना। आइडेंटिटी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इज आल्सो विल बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस टी माइनस लेमडा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट मैपिंग अ नॉन जीरो वेक्टर टू अ जीरो वेक्टर, तो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस implies this t minus lambda I is a singular। ओके। सो उस अगर हमारे पास टी माइनस लेमडा आई एक सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब हम लेमडा को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ओके। तो यू जस्ट राइट वन फर्स्ट रिजल्ट हियर, result 1 you just write here, if I'm just taking t, so let the t which is from vector space v to v, the linear operator, then a scalar lambda which is belonging to f is an eigenvalue of t if and only if
t minus lambda I is singular. ठीक है, if t minus lambda I is singular. Okay, तो you just remember this result. Similarly मैट्रिसेस में आते हैं, जरा मैट्रिसेस के अंदर देखते हैं. इफ यू आर सेइंग कि दिस इज ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स एंड वी आर टेकिंग दिस इज एक्स इज नॉन जीरो. ओके, अगर हम इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो दिस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू जीरो, द नल मैट्रिक्स, एंड दिस इंप्लाइज ए माइनस लेमडा ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज जस्ट इक्वल टू जीरो. एंड बी टेकिंग दिस इज एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर. तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दैट वी हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन. तो जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं उसके अंदर नॉन जीरो सोल्यूशन होता है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, तो उस केस में ये जो मैट्रिक्स होती है ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, जब डिटरमिनेंट जीरो होगा तभी रैंक हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर से कम होंगी, नंबर ऑफ जो वेरिएबल है उनसे कम होगी. ओके, तो a माइनस लेमडा आई विल बी इक्वल टू जीरो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, एक नॉन जीरो सोल्यूशन है. और नॉन जीरो सोल्यूशन है, अगर हमारे पास होता नहीं था ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और इसके पास अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है भी, नॉन जीरो सोल्यूशन अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो ये इंप्लाई करता था डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ए बाई एन बाई एन मैट्रिक्स, ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन दैट अदरवाइज वी कैन से रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके, so this will be a singular matrix or we can say determinant is zero. तो अब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो रखने के बाद जो हमें स्केलर्स मिलेंगे लेमडा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द आइगन वैल्यूज. ओके, तो यू जस्ट राइट सेकेंड रिजल्ट फॉर द मैट्रिक्स टू. So let A be a n by n matrix. We are taking square matrix over a field F. Okay, then a scalar lambda in F each eigenvalue is the eigenvalue of A if and only if this is A minus lambda I is singular. Singular. So this implies the determinant of A minus lambda I should be equal to G. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो जब हमें किसी मैट्रिक्स का या किसी लीनियर ऑपरेटर का हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे ए माइनस लेमडा आई को, है ना. ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वहां से जो स्केलर लेमडा होगा, जो अननोन लेमडा होगा, उसकी जो वैल्यूज निकल के आएंगी दैट विल बी ओनली द आइगन वैल्यूज फॉर दैट मैट्रिक्स और फॉर द लीनियर ऑपरेटर. क्लियर? सो नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. तो यही जो डिटरमिनेंट है जो इक्वल टू जीरो करते हैं तो लेमडा बिकॉज अननोन है तो लेमडा में एक इक्वेशन बनती है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, यू कैन जस्ट राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो लेट ए
be a n by n matrix over a field f. Okay, the फंक्शन अगर इसको हम कहें एफ ऑफ लेमडा, दिस इज सम फंक्शन या पॉलिनोमियल इन लेमडा, दिस इज ए माइनस लेमडा आई, तो यहां से जो भी ये पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन लेमडा। ओके, ऑफ डिग्री, जितना ऑर्डर रहेगा उतने डिग्री का पॉलिनोमियल है, जितना ऑर्डर रहेगा किसका, मैट्रिक्स का, एन। तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। क्लियर, समझ गए? तो वो ए माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और अगर इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट डिफिनीशन हम डिफाइन कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स A is given by this is your A minus lambda I is just equal to 0, or simply lambda I, sometimes lambda I minus A चलता है, that is इक्वल टू जीरो। तो इनका जो डिटरमिनेंट है उसका इक्वल टू जीरो कर दोगे, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहां से हम फिर हम इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो द डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी एन, equation is equal to the order of the matrix, of the matrix। क्लियर? यू जस्ट, तो अब हम इनके रूट्स को हम बोलेंगे दैट विल बी द आइगन वैल्यूज। ओके, तो जस्ट राइट द रिजल्ट्स, क्योंकि इनमें से जो स्केलर्स मिलेंगे वही प्ले करेंगे रोल एज अ आइगन वैल्यू। ओके, so you just remember that roots of this characteristic equation of a matrix are the eigenvalues of that matrix। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, दैट इज रिजल्ट नंबर 4। तो अगर हमारे पास टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, इफ वी आर टेकिंग एनी लीनियर ऑपरेटर, let we are just taking t be a linear operator,
on a finite dimensional vector space if A is the matrix of T with respect to any ordered basis B, then a scalar lambda belonging to F is an eigenvalue of T if and only if ऑफ ए। ओके, सो अगर हम ए को मैट्रिक्स, ए द मैट्रिक्स ऑफ टी है ना, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, जो भी हमारे ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस बी है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास टी एक ए द मैट्रिक्स ऑफ टी। ओके, तो वो निकालना हमको पता है। तो जब हम, तो जो उस ए मैट्रिक्स जो जो आइगन वैल्यूज होंगी वही उस लीनियर ऑपरेटर की होंगी। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, उसकी आइगन वैल्यूज हमें पता है और उसकी मैट्रिक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस बी, ठीक है, तो उसकी उस मैट्रिक्स भी वही आइगन वैल्यूज होंगी जो उस लीनियर ऑपरेटर की होंगी। तो ये वाइस वर्सा। ओके, तो जब हमें किसी लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे और मैट्रिक्स का फिर हम ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के फिर इजिली यू कैन जस्ट एबल टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। ओके, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, सो लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस vf if a is the matrix of t with respect to the order basis b, then a scalar lambda belonging to f is an eigenvalue of t if and only if lambda is the eigenvalue of a। ओके, तो ए की जो आइगन वैल्यू होंगी वही उस लीनियर ऑपरेटर टी की भी रहेंगी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है इस रिजल्ट के बारे में। सो नेक्स्ट वी कैन जस्ट हैव रिजल्ट नंबर 5। ओके, सो if you are just writing let t be a linear operator on a finite dimensional vector space vf। okay, if a if a is the matrix of t with respect to some ordered basis b of v, okay, then a vector v in capital V is an eigenvector of t corresponding to the eigenvalue lambda
if and only if its coordinate vector x relative to the basis b is an eigenvector vector of A corresponding to its eigenvalue. ओके, तो इनका क्या कहना है इस रिजल्ट में? इसमें ये बोला है कि टी द लीनियर ऑपरेटर इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V and E the matrix of the with respect to the some ordered basis B of V. Then a vector V in capital V is an eigenvector of T corresponding to the eigenvalue lambda if and only if its coordinate vector x uh, its coordinate vector x relative to the basis B is an eigenvector of A corresponding to its eigenvalue B. So उस वेक्टर V का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, ओके, दैट शुड बी एन आइगन वेक्टर ऑफ A. ठीक है, समझना इस बात को कि यहां पर तो हमने जो V लिया है, ध्यान देना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास V इज एन एलिमेंट in capital V, okay, and we have some lambda, so with respect to lambda we have this is as an eigenvector, so now V is an eigenvector for this linear operator T, okay, and here lambda is an eigenvalue, okay. So जब और हमारे पास जो मैट्रिक्स है T की, that is your A is the matrix of T with respect to ordered basis B that basis जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास A है. ऑब्वियस सी बात है, दिस इज सम नॉन जीरो वेक्टर, ओके. सो अब हमको क्या करना है, V कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. तो जब हम बेसिस के एलिमेंट्स लिखेंगे तो मान लो इस बी बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज V1 V2 V3 अप टू Vn, अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, okay. So we have, then this V can be written as the linear combination of these vectors of the VC. So you can have some A1 V1 plus A2 V2 and so on. This is A and Vn. So now we have coordinate vector x. Coordinate vector क्या होते हैं? The coefficient when you are writing the linear combination. Okay. So this is your A1 A2 up to An. Okay. So this now this is coordinate vector should be the eigenvector of A. So this will be the eigenvector of A, see, corresponding to eigenvalue lambda, ओके. सो अगर हमारे पास V कोई वेक्टर है कैपिटल V का, वो आइगन वेक्टर है T के अंदर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा, तो इस उस V को जब हम बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास कोफिशिएंट मिलेगा या कह सकते हो कोऑर्डिनेट वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी परफॉर्म एज अ आइगन वेक्टर फॉर ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा. ध्यान देना, आइगन वैल्यूज विल बी द सेम for the that, but eigenvectors it different with the matrices and with the transformations, okay. So you just remember this thing. So this is the result for that.
तो जैसे सिक्स रिजल्ट है, इसी को थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में आप आइगन वेक्टर लिख रहे हैं तो वो जो वेक्टर होता है वही हो जाता है। तो उस केस में तो हम इजीली कह पाएंगे कि हमारे पास जो आइगन वेक्टर है, जो हमारे पास आइगन वेक्टर लीनियर ऑपरेटर के लिए है वही तुम्हारा उस मैट्रिक्स के लिए भी हो जाएगा। बट अगर बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, देन यू कैन, देन द द कोऑर्डिनेट वेक्टर विल बी चेंज्ड फ्रॉम द वेक्टर इटसेल्फ, है ना। तो जो वेक्टर था उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर बदल जाएगा, तो इसका मतलब वो आइगन वेक्टर बदल जाएगा फॉर द मैट्रिसेस। तो यू कैन जस्ट राइट द रिजल्ट 6 टू क्लेरिफाई दिस थिंग। You can just write, we know that the coordinate vector of a vector in the standard basis is equal to itself, है ना। In standard basis is itself, okay। So the above result we can say that if we are working in a standard basis, then the eigenvector for the linear operator and eigenvector for the matrix, its matrix will be same। Then a vector is eigenvector of T if and only if it is eigenvector of A, where A is the matrix of T related to the standard basis। स्टैंडर्ड बेसिस, क्लियर। तो इस और जब हम मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादातर हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड बेसिस ही मैट्रिक्स लिखते हैं, तो उस केस में दोनों आइगन वेक्टर सेम होंगे। बट अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है और उसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, देन देन उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा दैट परफॉर्म एज अ आइगन वेक्टर फॉर ए। नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट नंबर 7। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द definition, it is clear that to find the eigenvalue and eigenvector of a linear operator T, we just have to find out the eigenvector for the matrix।
of t related to the standard basis. क्लियर? तो अब हमको अगर मान लो किसी लीनियर ऑपरेटर है और उसका हमको उस लीनियर ऑपरेटर का आपको वो आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज चाहिए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बेसिस उसके मैट्रिक्स लिख लेंगे, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का जो भी आइगन वेक्टर से आइगन वैल्यूज रहा होगा दैट विल बी आल्सो फॉर द ऑपरेटर एज वेल। क्लियर? तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, बेसिक फंडामेंटल। तो ओके, तो आई एम जस्ट फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। हम इक्वेशन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? दिस इज योर ए मैट्रिक्स व्हिच इज गिवन इन दिस वे। दिस इज 1 -3 3 3 -5 3 6 एंड -6 एंड 4। ओके, तो हमें क्या करना होगा? उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी। इट मींस ए माइनस लेमडा, और इसको इक्वल टू 0 करना होगा। तो जब ए माइनस लेमडा आई करोगे तो यू विल हैव दिस इज 1 माइनस लेमडा -3 3, and this is 3 -5 minus lambda, and this is 3, and this is your 6 -6, and this is your 4 minus lambda, is just equal to 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसका। तो दिस इज योर 1 माइनस लेमडा, ओके, एंड देन हमारे पास ये कॉलम और ये रो। तो दिस इज योर माइनस का 5 प्लस लेमडा, एंड दिस इज 4 माइनस लेमडा, एंड दिस माइनस दिस, तो दिस इज प्लस ऑफ 18। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास मान मान प्लस का 3। तो ये हमारे पास ये गया ये गया। तो दिस इज 1 माइनस लेमडा, एंड दिस इज दिस एंड दिस इज 4 माइनस लेमडा, और दिस इज 6 इज 18, तो माइनस का 18। नेक्स्ट है तुम्हारे पास प्लस का 3। तो ये गया, तो दिस इज माइनस ऑफ 18, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6 टाइम्स 5 माइनस 5 प्लस लेमडा। तो इस तरीके से इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से जो लेम्डा की वैल्यूज निकलेंगी दैट विल बी द आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसकी हम आंसर्स लिख दे रहे हैं कि आइगन वैल्यूज इसकी क्या आएंगी जैसे। तो लेम्डा की जो वैल्यूज मिलेंगी आप इसे सॉल्व करिएगा, इट्स अ टास्क, इज -2 एंड 4। ओके, जिसमें तुम्हारे पास -2 टू टाइम्स आएगा, है ना, क्योंकि चार हमारे पास वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। ऑर्डर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है ना। तो ये -2 एंड 4, ये इसकी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। ओके, जी सर। तो यहाँ तक क्लियर चीजें? कोई डाउट कहीं पर? नो सर, ठीक है। चलिए।